Welcome to Guwahati 65 News Now. I'm Anjali and these are the headlines. Mormugao Port Authority faces backlash after shutting a key pedestrian overpass. Forces locals to dangerously cross railway tracks. Monsoon sweeps across the country 9 days early. IMD forecasts heavy rain, gusty winds and high waves in the coming days in Goa. And now for the news in detail. The Mormugao Port Authority is at the center of a controversy brewing over the past few days in Baina after it shut a foot-over bridge, forcing people to cross railway tracks dangerously. This follows a similar row months ago over restricted access to the newly inaugurated Loop Port connectivity flyover ramps. On Sunday, Congress criticized the move, with leader Nandadeep Raut accusing the BJP of lacking control over its own central government units in Mormugao Taluka. He claimed local MLA Krishna Sarkar is fighting his own central government and declared the double engine model a complete failure. आयज हे जे आमी हांगासर गेट जी बंद केल्ली आसा ती आमचे कितलीच वर्सांची पायवाट देस्तेरोच्यान वास्को येवपाक लोक बारीक लोक सगळे थंयसरल्यान येतात. हांगासर आमच्या भावांची क्रिस्तांव भावांची एक चॅपल आहा थंय चॅपलाक येवपाक कितलेशे लोक ही पायवाट यूज करताले. आयज ती बंद करून उडयल्ली आसा. आयज एमपीएचो डिसिजन ह्यो आनी लोकल अथॉरिटीजांक ना लोकल आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंच्यांनी हें केल्लें आहा. सो हें म्हाका विचारपाक सोदता हांव की कितें चल्लां हें वास्कोन, म्हणल्यार कोण विचारपी आसा, कोण पळयता हें सगळें काय बेश्टेच वाऱ्यार सोडलेलें आहा वास्को. आयज त्या कारणाक लागून हांगासरल्यान जे लोक पळयता आसतले तुमी हे रेल्वे ट्रॅका वयल्यान क्रॉस जावन येत आसा. आमी हांगा आसलेले एक 50-60 लोक अशे हांगासरल्यान येयल्ले आहा. सो हें मातशें खंय तरी रिस्की जालां आनी म्हाका दिसता ही कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मातशें एमपीए कडेन वचून उलोवपाक जाय. ही दादागिरी चलची ना वास्कोन. दोनूच दीस पयलीं खंय तरी एमपीएन सडनली कोणाक विचारता ना विचारता येवन डायरेक्ट वेल्डिंग मारपाक लागले. म्हाका दिसता कोणाचो तरी कंट्रोल ना हांगासर वास्कोन मुर्मुगांवान हे तालुकान खंय तरी हे विकून काडला. एमपीए जावं गोवा शिपयार्ड जावं खंय तरी कोणाचोच कंट्रोल ना. आपणाक येता तो राजा समजता, येता ते जाय तशें चल्ला. म्हाका दिसता लास्ट टायमूय जेन्ना फ्लायओवरांतल्यान थंय गेट घातलेली बीजेपी मंडळ जावं तेंचे कार्यकर्त्यांनी थंयसर मोर्चा म्हणून येयलो. म्हाका दिसता हँड इन ग्लावज म्हणटा हांव. खंय तरी लोकांच्या दोळ्याक उदीक लावपाक खंय तरी हें घडटा. काल सुद्दां लोकल एमएलए वास्कोचो येयला आनी थंयसर आपूण वेल्डिंग मारता थंय रावला आनी आपुणूच झगडटा आपल्या सरकारा कडेन. हे कितें चल्लां? तुमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा मरे, खंय गेलें डबल इंजीन सरकार? हे खंय तरी अशें जावपाक जायना आनी हेजेर कठोर खंय तरी एक्शन जावपाक जाय. सपोज तेंचे कडेन जायना, तेंच्यांनी हात वयर काडचे. आमचो पक्ष काँग्रेस पार्टी ना जाल्यार खंय तरी आमच्या एमपीक घेवन आमी एमपीए चेअरमॅना कडेन खंय तरी मोर्चा व्हरतले. आयज हांगा येवचें कारण म्हटलें की आमची तुमी आतां वाट जाणाच आसतले एमपीएन जी आयज बंद केल्ली आहा. लोकांची आमी जावंक नासलेले तेन्नासून भुरग्या आमच्या डॅडीच्या पोतार आमचे जाणटे सगळे ती पांय वाट यूज करताले. जे बायणाकारांक आनी म्हण तूं आमचे देस्तोरोचे हेल्पंतीचे सगळे लोकांक वास्को कनेक्ट करताले. जी ते एमपीएन आयज बंद केल्लेली आहा. आनी म्हाका अशें दिसून येता की आयज हे दोनूय आमदारांक ते कॅर करिना एमपी जे आहा ते, आनी चेअरपर्सनाकूय कॅर करिना. बायलां सुद्दां अशी चलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आमचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही कितें रिस्कीत आहा हीच करपाची, पण हेजेर कितें ते बेगीन सुटावो काडचो. Hiru Mahale, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Guwahati 65. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In his 123rd episode of Mann Ki Baat aired today, Prime Minister Modi celebrated a trio of national achievements: Yoga Day participation, India being declared trachoma free, and major progress in social security coverage, as recognized by the WHO and ILO. Here's a closer look.
The Prime Minister opened with a striking tribute to International Yoga Day, recalling how 3 lakh people performed together on Visakhapatnam's beach and over 2,000 tribal students executed 108 Surya Namaskars for 108 minutes. आप सब इस समय योग की ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्मृतियों से भरे होंगे। इस बार भी 21 जून को देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। आपको याद है 10 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ और 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज्यादा भव्य बनता जा रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। Furthermore, in a milestone in public health, India has officially been declared trachoma free by the World Health Organization. Modi credited frontline health workers, Swachh Bharat and Jal Jeevan Mission for this success, declaring it a victory over preventable blindness. मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको देश की 2 ऐसी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको गर्व से भर देंगी। इन उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक संस्थाएं कर रही हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इन उपलब्धियों की भरपूर सराहना की है। पहली उपलब्धि तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे मिटाने में बड़ी मदद मिली। जल जीवन मिशन का भी इस सफलता में बड़ा योगदान रहा। Prime Minister Modi also recalled the emergency of 1975 to 1977, one of India's darkest chapters, alleging it aimed to subjugate the judiciary and stifle democracy. To underscore that point, he aired rare audio clips from former PMs Atal Bihari Vajpayee and Morarji Desai, as well as Deputy PM Jagjeevan Ram, voices that once defied authoritarianism. मेरे प्यारे देशवासियों, जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। इस ऑडियो में आपको उस संकट की भयावहता का अंदाजा लगेगा। वो संकट कितना बड़ा था, पहले वो सुनिए, समझिए। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल
दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. In a heartwarming celebration of tradition and faith, the fishing communities of Kharevado in Vasco, Kadpona, Ambeli, Veli and Asolna marked the feast of Saints Peter and Paul on Sunday with their iconic boat procession. Celebrated during the monsoon, this feast honors Saint Peter, the patron saint of fishermen, and serves as a reminder of the deep connection Goa's coastal communities share with the sea. Here's a look at the festivities on water. As morning light glistened on the water, Karevado's fishermen prepared for a celebration rooted in tradition. Tying their boats together, they built floating platforms adorned with miniature chapels and model churches, transforming the river into a moving cathedral of devotion. The day began with the solemn church service led by the local parish priest. Fisherfolk dressed in white and blue offered prayers for protection and good catch in the season ahead. भाशेन बागेवन पावलो आनी पेद्रोचे परब समारोपता आनी बागेवन पेद्रो जावन आसलो एक खारवी आनी तो खारव्याचो आस्कारी. आपल्या वावरा वरवीं ताणें उदार पसण केला आपल्या कुटुंबाचेर आनी एक भावंडाचो एक नमुनो आम्हां सोमेस्ता. आयज केद भाशेन ही आमची वास्कोची खारवी भाव भयणां बागेवन पेद्रोचो उगडास करता आनी ताचेच मजतीन आयज हांवें तांच्या वावराचेर बागेवन पेद्रोचे मसतीन आशिर्वाद मागला. परस्पर हो वाव धंदो बरे भाशेन फुडें वचूं देवाचो आदार आमी ह्या दोऱ्याचेर आनी तांचेरूय मागला. देवान तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखूं आनी निवारूं. पावलाचे आयज परब ही आयच्या परबा हे परबेची सगळ्यांक हांव खुशालकाय आमच्या फिशरमॅनांक जशें आमच्या गोंयांत भाव भयणां फिशरमॅन आमच्या सगळ्या लोकांक ही परब खुशालकायची परब हांव येता. आमी आयचे फेस्त सेंट पिटर पॉलाचे आमी सगळे एकठांय रावन ओल्ड क्रॉसा कडेन एकठांय जावन रोजार करून ती सेंट पिटर पॉलाची एक इमाज घेवन आमी पुरसांव करून डोक्यार येता. ही परंपरा आमची सगळ्यांनी आमच्या जाणट्यांनी ज्या फिशरमॅनांनी ही परब हेच भाशेन करताले आनी आयज आमी आजून पासून ही कंटिन्यू आहा. म्हणटकूच आयज आमी सगळे सेंट पॉल पिटरचे फेस्त आमी दोरयान वचोन आमी सेलिब्रेट करता. ताका लागून आयचे पाद्री करून आमी आमच्यो दोरयो पयलो आमी बेंजार करता ताची इमाज घेवन आनी कित्याक लागून की आमकां बरी पीक जावपाक. आयज आमचे सांत पेद्रू आनी पावलोचे फेस्त. आयज सबोर गोंयांत नुस्तेकार भाव तशेंच सगळे गोंयकार जावं आख्ख्या वर्ल्डाचे हें फेस्त मनयतात. कित्याक पेद्रू आहलो सांत पेद्रू आहलो खारवी भाव. सो हें फेस्त आमी व्हडे उमेदीन सगळे जशे वास्कोचे नुस्तेकार आयज मेळोन सगळीं भाव भयणां आतां आमी भायर सरले सकाळीं मीस आयकोन आमी आतां भायर सरले आमचो दोरयो बेजार करपाक आनी जशें फादरान सांगलां ते भशेन सगळे नुस्तेकार भाव हे फेस्त सारके व्हडे मनान आनी व्हडे खोशेन मनयताय. The feast was also celebrated in Kudbona, Ambeli, Veli and Asolna, where fisherfolk gathered in huge numbers with boats adorned with flowers and ornaments, transforming their coastal waters into a moving cathedral as well. Watch. सगळे आमचे लोकांक आमच्या गोंयकारांक सगळे नुस्तेकार आयच्या दिसाची सेंट पिटर एंड पॉलाची फेस्ताची परबी आनी वर्सान आमी सेलिब्रेट करतात. एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन लोकांचे मीस आयकतात आनी मागीर सांजचो एक आमचे
सांगोड हे सांगोड हें ट्रेडिशन आमच्या जाणट्यांनी हें करून दवरलें आनी आतां ते ताजे फाटल्यान जनरेशन येयलां ते पासून हे फॉलो करीत आहात जी आमची व्हडी आहा ती बांदतात आनी आमचे हे सगळे आख्खे रिवर सालवाक एक रावंड मारतात थंय आमचे जाय जावन हे न्हंयतूय कोण आपलो जीव हें लॉस जाल्ले आहात तेन्ना आमी थिंग मागतात आमचे जायते पुलीस आसतात रिलिजियस प्लेसीस आहात थिंगाय आमी ती रोजार करतात कांयच्या दिसा आख्या रिवर सालवाक आनी हें ट्रेडिशन आमचें हे आमच्या जाणट्यांनी दवरलें तें आयज पासून आमचे भुरगे करतात पूण आतां पळयलें जाल्यार तुवें सगळेच उमेदीन आहात आनी भुरगे तशेंच आतां बायलोय विचारतात तर तांकांय आतां रावंड मारतात पयलीं बायलो वचनासल्यो पयलीं फकत आमचे दादले वयताले सो आतां आमच्यो बोटी मातश्यो व्हडल्यो जाल्यात सो सेफ्टी आहा सगळ्याकच आमच्या बायलोय हे सांगळाचे रावंड मारून येतात सो हें ट्रेडिशन आमचें सदांच उरतलें आनी कित्याक दिसता की आमचे उमेदीन आसतात आनी म्हाका दिसता हें आमी ट्रेडिशन सांबाळूनय दवरपाक जाय गरज आहा तें एकदां सांगोड प्रमोट करपाक आमी ऑलरेडी फायल दिल्ली आहा आमच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचेर सो ऑलरेडी ट्युरिजम हेचेर सायटीचेर लास्ट इयर कितें जाल्लें तें ऑलरेडी तेमी घातलें आहा लोड केल्लें आहा आनी आयज ट्रेडिशन आमच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे मनीसूय येयल्ले आहात आतां सर्वे करपाक कित्याक हिंगा कसो प्रोग्राम जाता कितें कितें एक्टिविटी जातात ते सगळे फायंड आवट करपाक येयल्ले आहात आनी आमकां ट्युरिजम मिनिस्टरान प्रॉमिसूय केल्ले आहा जशें सोजाव जाता नॉर्थाक तेच भाशेन सांगोड येता वचताना आमकां हे व्हडलो इव्हेंट इन्शुरन्स आमकां दिल्ले आहा. Hiru Mahale, Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Arun Naik for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, monsoon momentum is building up. As of today, the southwest monsoon has officially covered the entire country, 9 days ahead of schedule. In Goa, while the rainfall remained moderate over the last 24 hours, the IMD has issued a fresh advisory for potential heavy rain, gusty winds and high wave activity in the days ahead. Here's the full report. The Indian Meteorological Department has confirmed that the southwest monsoon has now covered the entire country, marking its full advance 9 days earlier than normal. The monsoon reached Delhi, Haryana, West Uttar Pradesh and Rajasthan today, wrapping up its national spread by June 29th instead of the usual July 8th. In Goa, the monsoon remained fairly weak over the past 24 hours, with light to moderate rainfall recorded across most areas. No thunderstorms or gusty winds were reported, but conditions are expected to intensify in the coming days. According to the Goa Met Center, light to moderate rain is expected across both North and South Goa every day till July 5th. Heavy rainfall at isolated places, along with winds reaching speeds of 30 to 40 km per hour, gusting up to 50 km per hour is also likely throughout the week. Monsoon covers entire country ahead of schedule. Goa braces for week-long rain and gusty winds. Heavy rain likely in isolated areas till July 5th. Yellow alert issued for next 5 days in Goa. Maximum and minimum temperatures for Monday 31 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.